This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Hey, it's your poker guy, and I am back streaming MPL's first final table cards up stream. It's going to be crazy. बहुत मजा आने वाला है. MPL does these feature events every day of the week. हर रोज कुछ ना कुछ होता है. मंडे का मैडनेस है तो वेडनेसडे का बोनांजा है, सैटरडे का स्वैग है. तो आज जब मुझे चांस मिला फाइनल टेबल पे कमेंट्री करने का, तो अपना तो फाइनल टेबल बहुत टाइम से हुआ नहीं है, तो आई जंप्ड ऑनटू दिस चांस. देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एक्शन. आईसीएम प्रेशर होगा और कोई भी राइट प्ले और रॉन्ग प्ले नहीं होने वाला है. जस्ट मेरे फेलो कमेंटेटर और आप लोग सबका रिएक्शन होने वाला है कि भाई इसने ऐसा क्यों खेला. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इनवाइट माय को कमेंटेटर, फेलो मुंबईकर, मिस्टर जोश में जोशी, अनिरुद्ध जोशी. व्हाट्स अप? No worries, guys. Yep, Anirudh is like, Anirudh थोड़ा टाइम ले रहा है. He's like सोच रहा है कि मैं FT पे क्यों ना आ जाऊँ खुद ही, rather than actually waiting and commentating an FT. So Anirudh और मेरा, Should I mute Discord? हम लोग हमारे स्टैट्स कंपेयर कर रहे थे, मेरे और अनिरुद्ध के. वो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको. If Anirudh's back, Anirudh, can we hear you? Okay, perfect. So, Path, what do you think about this hand? Like, with ace-10 on the button, with sub-10 big blinds. Okay. What do you think Lazy Cheetah should be doing here? The way I see it, 1 second. Yeah, okay. Now, because we can see cards up, you're like jam. That's how I see it at the moment. He's playing with about good 10 bigs only, 10, 11 bigs. So, yep, it's a clear jam. कोई doubt नहीं है. And he does that. Yep. So, आज जो अपने players है, guys, we have Lazy Cheetah, we have Green Viper, we have Tapan with a Tapan, but अपन तपन बुलाएंगे. Grindelwald है, Innocent Boy है, और Nisha Singh. Okay. So Anirudh with, oh wow, Nisha Singh is aggressive with that ace-7 from middle position. She decides to jam with a good hand. Innocent Boy, JK, Karan Johars. I think, guys, Anirudh का feed थोड़ा कम आ रहा है. We are waiting to get him. Anirudh, if you can hear me, please join in. Okay. गाइज, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं चैनल पे हूँ, मैं जिसका फीड देख सकता हूँ, रिप्लाईज देख सकता हूँ, मैं आप लोग के चैट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ. जो भी है, सरप्राइज एक गिव अवे भी है. ओके, इट्स द फर्स्ट स्ट्रीम, सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ टेक्निकल इशू. इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द गेम. Yep, we're facing few issues here. Sure, what's up, guys? चलो ठीक है, जब तक आ रहा नहीं है, the best way to handle any kind of problem is a ticket giveaway. So whoever is watching me, I don't know from which other places you all are watching us. बहुत जगह पे stream हो रहा है आज ये cards up event. So what we are going to do is, सब लोग अपने यूजर नेम्स में 2 टाइप के गिवअवेज करने वाला हूं. फर्स्ट गिवअवे आज का, विच इज आपके MPL यूजर नेम में अगर नंबर्स है, जैसे अगर आपका MPL यूजर नेम है पार्थ 1 2 3, पार्थ 4 5 7, व्हाटएवर इट इज, जितने भी नंबर्स है आपके MPL यूजर नेम में, अगर उसका टोटल, जिसका भी टोटल 10 तक आ रहा है, उसको आज एक टिकट मिलने वाली है. एंड कोई नॉर्मल टिकट नहीं मिलने वाली आपको. 2750 रुपीज की MPL की Saturday swag, which is a 10 lakh event. So anyone here who has a username जिसका total number 10 पे आ रहा है,
please ping me right now on my Instagram, on MPL's Instagram, or else if you are watching it तो आप तभी का तभी उधर मेरी, अगर आप योर पोकर गाय के YouTube पे देख रहे हो तो उधर जाके कमेंट करो, you might just win a ticket right now. First person जिसका नंबर 10 तक आ रहा है guys, come on guys, whoever here has a chance, आईडी कमेंट मत करो, जिसका भी नंबर आ रहा है 10 तक. आई थिंक आई ऑलरेडी हैव अ राइट आंसर गाइस, दिस इज फैंटास्टिक, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. जो भी यहां है, अगर आप लोग हो तो एक जन ने आंसर दे दिया है. आई थिंक तब तक अपना फीड आ गया है, तो मेरा फर्स्ट टिकट हो गया है. दीपक इज द लकी गाय. दीपक का MPL आईडी इज दीपक 55KU. 55 आ गया उसके यूजर नेम में. 5 and 5 is 10. So sick one दीपक. आपने जब अपना आईडी बनाया था तो इतना सोचा नहीं होगा कि बॉस मैं 5-5 का क्या वैल्यू होने वाला है, बट दैट इज इट. आई थिंक अपना फीड इज बैक, सो आई एम जस्ट कंफर्मिंग विद द टीम. डू वी हैव द फीडबैक? आई थिंक द फीड इज बैक गाइस, प्लीज लेट मी नो इफ द फीड इज बैक. नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, MPL ने मुझे कहा है कि आप 50 टिकट दे सकते हो, तो कोई स्ट्रेस नहीं है, आज सबको टिकट देते जाएंगे. So yeah, let me know if the feed is back. But Deepak, congratulations. Yep, I think the feed is back on, guys. Yep, team, do we have the feedback on? Okay. Yep, the feed is back on. Everyone's watching us from my YouTube channel. We're streaming first Cards Up event. भाई मेरे को लगता था कि ये कितना सिंपल चीज है, बट फाइनली जब ये लोग बैक एंड पे कर रहे हैं, पता चल रहा है कि कितना प्रॉब्लम है. ओके ओके गाइस, चलो लेट्स गो बैक टू द इवेंट. वी आर स्ट्रीमिंग द फाइनल टेबल. Anirudh is facing some issues. I am kind of figuring it out. Okay, we are game. Let's go. So guys, okay, another ticket might be, अगर आप लोग को विनर्स नहीं पता, मैं आप लोग को टिकट्स कौन सी है वो नहीं बता रहा, बट अभी आपको गेस करना है कि आज का विनर ये 6 पीपल में से कौन होने वाला है. एवरीवन कमेंट who the winner is going to be. I want to know what do you guys think. और मैं आप लोगों को कुछ स्टैट्स भी बताऊंगा आज के प्लेयर्स के बारे में. तब तक के लिए लेट्स गेट बैक टू द फाइनल टेबल. स्मॉल ब्लाइंड 405. इतना चीज एस्टैब्लिश हो गई है कि निशा सिंह इज सॉलिड अग्रेसिव. आई डोंट नो इफ शी इज अ वुमन ओनली, her name is woman वाला निशा सिंह. तो लेट्स सी के do we have a soul girl on the final table here? Then I'm rooting for her for sure. Okay. Ace king here. Ace king. Wow. Let's see how Green Viper plays this. It's a limp. I am not very sure ये limp का क्या है. Not a big fan. Final table पे अगर आप वो कर रहे हो तो. Okay. I have a lot of people watching right now. There What do you you go. think should be happening with? What do you think should be happening with Ace King here? I think he was wrong there जब उस पे limp किया यार. Early position से अगर आप limp कर रहे हो, was that right, Anirudh? I'm not a big fan of that, the limp. And now he's going to be out. मतलब he has nothing Ace King के साथ. अभी खाली वो emotionally hand के साथ खेलेंगे. जो कर रहे हैं वो Ace King के साथ. It was just a 2 bigs का call था. He did it. He's playing with about, अगर आप वो खेल रहे हो तो 20-25 bigs के साथ. Green Viper. I'm just interested to see Green Vipers play right now. Innocent Boy also, he tried to take it down with a 2 BB raise, but nahi mila. 2.5 bigs raise. Pressure here to Lazy Cheetah को fold कर. Oh wow! With a straight draw, Lazy Innocent Boy showing a 7.5 blinds raise. Green Viper cannot call that off. I really like that play. मजा आया खेलने का. बताओ भाई लोग कौन जीतेगा मुझे बताओ. अभी तक मुझे जो इंप्रेस कर रहे हैं, मैंने खाली निशा सिंह का एक प्ले देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसके पास एस 6 था आई थिंक एंड शी जैम्ड, और दूसरा था इनोसेंट बॉय राइट नाउ.
playing aggressive, that's fun. 8-9 suited is a good hand having from the button. गाइस मैंने ना मेरा फोन इधर साइड पे रखा है खुला, यूट्यूब पे आप देख सकते हो बहुत सारी चैट्स है, बस मुझे चेक करना है कि क्या हो रहा है. आई वांट टू इंटरैक्ट आल्सो, नॉट जस्ट कमेंटेट. ओके, बटन पे आपके पास फ्लश ड्रॉ है, दैट्स अ वेरी नाइस दिस थिंग. Seems like a very interesting play here. Okay, 5-6. Okay, you miss your flush draw. You're playing against Tapan, who now has also a 5 pair. If it's showdown, easy for Nisha Singh. Okay. Wow, Grindelwald folds with Queen King from early position. 6 max people may. Is that right play? Wrong play? I have no idea. Lazy Cheetah decides to jam. Now Grindelwald must be happy. Grindelwald का मतलब क्या है? वो actually स्विट्जरलैंड में एक विलेज है. तो मुझे पता नहीं कि ग्रिंडलवॉल्ड ने अपना नाम ऐसा विलेज के नाम से क्यों रखा है, बट ये चीज इंटरेस्टिंग हो तो रही है. ओके, ये हैंड आई थिंक लेजी चीता might do one more jam cut off से, in my opinion. Nisha Singh decides to limp in with a 8-6 suited. भाई लोग मैं आप लोग के साथ तब तक कुछ स्टैट्स शेयर करता हूँ. ओह देयर यू गो, अपन लेजी चीता को समझ रहे हैं अभी. 133k which is about less than 10 bigs के साथ. ओके, 4-6-6 पेयर. Oh, I thought we had our first elimination, but नहीं हुआ. गाइस बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, बहुत सारा डेटा देना है. मैं पहले डेटा देता हूँ, टिकट गिव अवे भी करूंगा, घबराओ मत. पहला डेटा ये है गाइस कि आज का बेयर मिनिमम अमाउंट जो है वो है 12,300 रुपए. 12,300 के बाद मिलेंगे 17,800 रुपए फिफ्थ पोजीशन को. 25.5, then comes 31,500, 48,750 and up top is 72,000. ये पूरा चीज इन लोग को आई थिंक 1299 की बाइंग में मिल रही है. इट्स अ 60 टाइम्स बाइंग अप टॉप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मार्केट्स आर एनीवे डाउन. आई थिंक पोकर इज द नेक्स्ट थिंग. MPL is giving us great value there. Giving you more stats right now. आप लोगों को मैं थोड़े इनके ITM परसेंटेजेस बताता हूँ. जो मेरे पास डेटा है, मैं बहुत फैंसी डेटा के साथ बैठा हूँ. ऐसा लगता है वो क्रिकेट पे स्टार स्पोर्ट्स में बैठते हैं ना कि क्रिकेटर्स का क्या डेटा है, वैसा अपने पास थोड़ा डेटा है आज. सो surprising stat, green viper. Okay, wait, let's see if Nisha Singh plays attacking here. If she tries to steal by jamming uske 2 bigs ke race pe, which she will not, I think so, it's a clean fold for me or just a call, but there's no need to call there. You're playing with about 18 bigs. Ek big bhi bahut valuable hoega, so I don't think so she is going to call it. She jams. And it's going to be an easy call off on lazy cheetah, I believe. But ये right play है कि नहीं, I'm not sure, because Nisha Singh should understand कि early position से UTG पे उसने 2 bigs का रेस किया है. उसको बहुत hand strong होना चाहिए, आप थोड़ा value देना चाहिए. But ICM pressure. दोनों same stacks के quite a bit still. Okay. Oh God, lazy cheetah seeing a bye-bye. Nisha Singh with K4 takes it down. We are rooting for Nisha. She is right now in chip. Nisha Singh with the King 4 suited is in chip lead. Nisha Singh का आपको बता दूं, आज तक वो 3 टूर्नामेंट खेली है, पता नहीं. Nisha Singh has played 3 tournaments. ITM percentage is 33. तो हर एक टूर्नामेंट, जो 3 टूर्नामेंट में से एक टूर्नामेंट वो ITM करते हैं. Call off. I think we might have a first elimination. Green Viper in a tough spot. Pocket Fives के साथ क्या किया जाए? Pocket Fives के साथ कॉल किया होता तो आज आपका तो अच्छा होता. But so we have a first elimination. I think I have Aniruddha back. Yes, Aniruddha, are you back? Can you hear me? I think he can hear me or he cannot hear me. I'm not sure. Yes, Pat, you are audible. Awesome. Everything good? Perfect. Yeah. I mean, did you see that hand? Like, it was a crazy hand, man. 4-6 offsuit. भाई इसके पहले वाला जो हैंड था K4 versus Ace Jack, I feel bad for lazy cheetah यार. मतलब वो मैंने ये समझ लिया निशा लेजी चीता को टिल्ट पे डाल दिया यार. गंदा वाला. Okay. But yeah, I mean, I love the way Green Viper is playing here. Like, he's not afraid at all of the chip leader. Like, just shoving his
ace 5 from the small blind into the chip leader. Wow. Like that takes guts, man. Especially with like This is kings. going to be an Or interesting hand. I and he was decides to expecting this. limp and gets a shove. Khatam. But Nisha Okay, Singh ka that dum is hi wala tha. amazing. Oh man. Yeah, this is a Oh, snap wow. call here. Oh, and Ace! there's an ace on the flop. Heart. A And heart. there's a flush complete. Sick one, sick one, sick That one, is sick one. crazy. बट यार भाई Oh. निशा सिंह का प्ले अच्छा नहीं था प्ले अच्छा नहीं था यार मतलब कॉल था ही नहीं ना यार Yeah. क्या किया वो So Nisha shoves again. अभी तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है प्लेइंग विद I mean, yeah, Green Viper has to do this probably. I don't think he can fold nines in the spot at all. But I mean, like, I'm not sure I like the shove particularly because if you get like re-shoved on by someone behind, then it becomes like really a weird spot. Oh, flush versus full house. Yeah, you're absolutely right. Considering that innocent boy plus Papan के पास उसका 2x the stack था, तो you're absolutely right. Correct कि मतलब वो जरूरत नहीं थी उसकी, but जब तक चल रहा है, I mean, even the way okay, but like the way Tapan is playing opening king deuce offsuit from under the gun, if he was the chip leader, I wouldn't really mind this. But like now this is and he calls. Okay, and yeah. वो बह जाना कहते हैं तो वो कर दिया थोड़ा I think, but he had the tricks to play with it. Ginderwald takes it down, gets a easy double up. Yeah. For sure. Interesting stat about Green Viper. एक ही टूर्नामेंट खेला है बंदा MPL पे, वो आज है और 100% ITM है बंदे का, तो of course आज फर्स्ट टूर्नामेंट है, तो he is assured of already rupees, अगर मैं चेक करूं तो अभी फिलहाल 25.5. Okay, Adil, this is going to be another mad hand. Yeah, I mean, standard flip. Oh, king on the flop, and yeah, Green Viper gets a double up now. So Green Viper and Innocent Boy like trading chip leads at this moment. I feel dominating the final table gameplay completely. So at button with like this stack with 4 left, I would open this hand. Okay, Green Viper decides to fold. Yeah, I mean he should be defending here Ginderwald, if not at least like 3 betting. भाई मैं ना जो देख रहे हैं उनका I think there are some about 20 people watching on my YouTube channel right now and लोगों का amazing man. एक इंटरेस्टिंग कमेंट है निशा के बारे में कि पापा की परी FT कैसे आ गई. So okay, oh wow, look at this hand, wow. 2 pair. Yeah, I mean like this thing. So again, actually being Ginderwald there, I would actually prefer to like just call on the turn and let Tapan bluff his stack off on the river. Yeah. And he just decides to shove an ace there. Deuce it is not gonna be a call. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ज्यादा अग्रेसिव नहीं खेल रहे. I know FT पे अग्रेसिव खेलते हैं, but बहुत ज्यादा अग्रेसिव. Too aggressive, and no, but it's like so nice to see these players play so aggressive and not be afraid of the money jumps or like the chip leader. That is. Okay, so 3-way. Okay, now so this is just most likely gonna be a chop pot. Yeah. Or I wouldn't mind the two coming on 2 on turn. Will be fun. 2 on turn. नहीं वो नहीं खेलेगा. I don't think Innocent Boy should be calling this. Like, yeah, just fold it. It's gonna be interesting to see, like, when you're playing for a chop, at least in this situation. But I mean, I don't think someone can fold trip kings here. But like when you have the same hand, you can with your opponent. It actually is like who's playing it more aggressively, and can you like get your opponent off that same hand? The dominant one takes it down. जो aggressive में जो dominant रहा वो लेके जाएगा. सही बात है. But यहाँ पे I don't think anyone's gonna fold. Like trips fold करना यार यहाँ पे would be. I mean they are both thinking कि चलो यार मेरे तो मजे है सामने वाला bet कर रहा है. But they are both gonna end up like just chopping the pot. उसका मजा ही अलग होता है. Yeah, I mean like standard call, chop. सब लोग, there are a lot of Nisha Singh fans in the house, Nisha Singh जज पड़ी, क्या हो रहा है बहन? Okay, now this will be interesting. अपन with ace 2, Green Viper क्या करे? Pressure लगाए? Green Viper is playing by the book. I mean pressure. So he's playing really like safe, and I think like 9-4 is like too bad of a hand to put pressure there. Like you can limp and take a flop maybe. But like it's not a good hand to like just shove.
unless you have a read on the opponent कि यार ये भाई सभी fold कर रहा है, हम इसको करा ही देंगे fold कुछ तो. Got it. King 7 takes Okay, the wow. lead. So Grindelwald has 67% equity on this. But ठीक है ना, उसने थोड़ा रेज मारा तो आई थिंक वो भी गिव अप करने लायक है, बट ये लोग टॉप नहीं, so he defended from the big blind and now decides to donk bet here. Innocent boy should be calling. Like, this is a pretty safe board, and even for Tapan actually. Okay, but Tapan. Now this is a card that Innocent boy can represent. But like Ginterwald is not afraid of anything. He's like, भाई तेरे पास है एक का तो कर call. Oh, now this becomes a really still goes with the 1 BB bet. If Innocent boy raises here, he has to fold. Okay, like just the call. Sir, those are the moments where, like, if you find it in you to make that raise or make that shove, that is where, like, those are the spots you have to take and get folds in. गाइस मेरे को ये बताओ, आप लोग कितनी बार मतलब ऐसा डू यू प्ले फॉर विन, डू यू प्ले फॉर दिस थिंग आईसीएम के भाई मेरे को थर्ड सेकंड थर्ड आना है. आई हैव देवव्रत वाचिंग हियर. वो देवव्रत बहुत बार एमपीएल पे खेलता है, स्ट्रीम करता है, मैं देखा है वो शांति से चिप अप करते जाता है, शांति से अपना जगह बचाता है और वो सेकंड थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे अच्छा पैसा लेके जाता है. तो वो एक अप्रोच है जो मैंने देखा है लोगों का. तो आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वे. So why now there is actually no right way. Like, players can play anyway. So abhi yahan pe it's going to be interesting. Like, I don't limp. Green Viper should raise unless he decides to play this tricky. Tricky the thing is blind versus blind mein. But like when you're playing blind versus blind and four-handed, it's like your ranges are so wide that you can also be raising with absolute garbage here. Correct. Kings for Innocent boy. Last time Queen and he decides to defend. And but I mean, again, I don't think he's gonna get any action here at all. 7 deuce. Tapan just checks. Okay, wow. Monotone board. Straight draw. Over-ender for Tapan. Correct, exactly. Maza to aayega. But he just gives. I mean, like, probably makes sense. Like, monotone board hai, like, he'll have a lot of overpairs and stuff there when he raises that. Like, actually, उसने limp करके आया था. उसने लिम्प करके आया था, करेक्ट. तो आई थिंक वो इतना मतलब नहीं था. Jack 9 folds. 4-3 Tapan, like, seeing Tapan, he should be folding. What is so like, except for I have to go with Green Viper, like, with his stack size, like, he's got like a stack of like almost like these two guys, like Innocent Boy and Ginterworld combined, and Tapan is just a short stack, so Tapan takes it down. करो कि 6 मैच टेबल्स पे एफटी कमेंट्री करने में आपको कितना फास्ट होना पड़ रहा है, हैंड इतना जल्दी खत्म हो रहा है. Exactly. नेक्स्ट हैंड चालू हो रहा है. We can't discuss the hand also. It's really fast. It's beautiful, but but that's a good thing because, like, blind levels are going up quickly, so people want to play as many hands at a lower blind level as possible. Okay. So King 7 can raise here. अच्छा उसने भाई fold कर दिया. Like, I mean, like, this ranges. Okay. Let's see what Green Viper raises. Okay. गाइस जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं सेकंड गिव अवे जल्दी अनाउंस कर देता हूं. अपने एमपीएल यूजर नेम्स अभी फिलहाल मेरे YouTube पे ही मैं देख पा रहा हूं और कहीं नहीं देख पा रहा. अपने एमपीएल यूजर नेम्स YourPokerguy के YouTube पे जल्दी कमेंट कर दो. जिसका मोस्ट फनी है उसको एक टिकट मिलने वाली है. जिसका एमपीएल यूजर नेम मोस्ट फनी है उसको एक टिकट मिलने वाली है. गिव अवे बहुत जरूरी है सबका मन बनाए रखने के लिए. तो गाइस कमेंट योर एमपीएल यूजर नेम. लेट्स गेट बैक टू द प्ले. Tapan is like, Tapan is like taking his spots and like putting pressure on other players even after being the shortest stack. So that is something that's like really good. Queen 7, he opens to 2 big blinds. But and again, like, others are being also very quiet. मतलब ज़्यादा से जो पहले ऋषा सिंह और लेजी चीता थोड़े ज़्यादा वो थे, aggressive थे, I feel. हाँ. No, so that, like, and what Tapan is doing is when Tapan opens or something, he's actually like just opening very small sizes, so he's not risking a major chunk of his stack to bluff it off or something. But like, this is a spot where like like if he decides to take a stab at this again on this turn, boss
Wow. Now this is interesting. What do you do, Parth? Like if you are innocent, So obviously he makes the call. I would have folded. Yeah, I would have folded. सच्ची बोलूँ तो innocent boy की जगह मैं fold करता. Flush draw भले था No, but but like still you fold had the करता. nut flush draw and you also had like king pair with like loads of improvement. You can improve with an 8, you can improve with a king, you can improve with any diamond. But like And innocent वो boy and वो इक्विटी चेक नहीं किया मैंने. इक्विटी वहां तो दिखा रहा है. आई थिंक एमपीएल इज शोइंग द इक्विटी परसेंटेज आल्सो ऑन yeah, टेबल. दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. बट हाँ, open जो भी ender आपने for green viper now. करेक्ट. And but like again, innocent boy and green viper like with similar stacks now. And like Correct. so I like to think that whoever busts Ginderwald now will have the chip advantage when going to heads up. So like they'll obviously have that advantage. अनिरुद्ध गाइस, तो मैं आप लोग को पहले ये बता दूं कि मैं जितनी बार आईटीएम किया है उतनी बार अनिरुद्ध ने एफटी किया है. तो नहीं यार, that is just Parth is being too modest. Parth is just a cash game crusher. Parth tournaments खेलता कहाँ है? तो बट एनीवे, तो गाइस अनिरुद्ध का अपन टेक लेते हैं. मस्त अपने को समझते हैं कि अनिरुद्ध मुझे ये बताओ यार कि कितना चिप एडवांटेज का ऑफ कोर्स बहुत फर्क है. बट व्हाट इज योर बेस्ट स्टोरी कि आपने कितना हेड्स अप में सपोज आपने कुछ एकदम धमाल कभी किया है कि यू वर डाउन एंड देन यू कम अप. ओके गाइस, वी गॉट अ स्ट्रेट सीधा फ्लश आ गया. सॉरी, आई मीन सॉरी, स्ट्रेट आ गया है. Straight with a pair of 9s. Now I mean it's like yeah. Queen spoiled it. नहीं तो यार गिंडरवॉल्ड के लिए ये था एटलीस्ट डबल अप था यहाँ पे. हाँ clearly. I don't think Green Viper is gonna like he might call this bet, but ठीक है, that's a fold only. So Anirudh, your story heads up का मुझे जानना है अगर so there was this one like my favorite. It wasn't a heads up moment, but like PSL का SNG था, and like I was like we were playing 300 and there was Abhinav Iyer on my table and like I ended up busting him. तो उसको बस्ट करना was like the career highlight कि यार उसको मैंने Facebook पे मैसेज भी किया था उसके बाद कि ब्रो देख मैंने तेरे को आज बस्ट किया. वो थोड़ा रिस्की काम भी है पर अच्छा किया. No, but like that in general the PSL environment is like so amazing where like and like you get points for your team. That makes it even better. Like you're helping your team ka leaderboard standings and everything. So in general, that was I think one of the best plays. But heads up, there was this one championship where I was like 300 or I was heads up and I was 400. I was the shortest stack and heads up I went in with like the chip lead and उसके बाद वहाँ पे जाके dominate किया था. So that was amazing. Got it. Coming back to the FT, I want to see some monsters against monsters. थोड़ा okay, wow, this is अच्छा. But yeah, like as you can see, like so guys, the structure is so deep. You can see how deep all these players are playing, right? Like Green Viper being the chip lead, and like even the shortest stack here has like 25 big blinds. Usually, जो होता है like बाकी के sites वगैरह पे देखते हो, it gets like too quick and like it's just a shove fest. Here players can like just take their time, wait for their hands. You don't have to be in a hurry to like कि अरे मुझे ये hand लेना ही है, ये hand spot लेना ही है, unless you are lazy cheetah. हाँ. But फिर तो यार फिर everyone's in hurry. Interesting play Queen 5 versus Queen 8. He's like अभी मैं थोड़ा chip steal finally करूँगा. Innocent boy decides and gets it. So that's interesting. Ace 8, I mean, I like him shoving here also, or like just limping, raising, everything is an option. Guide me, आप ये shove करो Ace 8 यार, क्यों करो shove आप? कर दिया. अरे यार तुम्हारे पास Ace X है 300 में, like your hand is going to be good so much of the time, and especially when you're the chip leader. All you want to do is like put pressure, make them make like negative EV calls. Why shove? 2.5 bigs raise नहीं करो आप and just try to take it down. नहीं like so what happens is if you raise 2.5 bigs and they decide to shove with like similar hand or a worse hand, Ace 5, Ace 4 कुछ shove कर दिया, then you are put in a really tough spot. You can't call there. So it is better to like shove and put pressure. Okay, so everyone, this is the actual good suggestion. मतलब मैं यही पूछ रहा था. मैं 2.5 करता. I'm like 800 का stack है मेरे पास. मेरे को risk नहीं चाहिए. But that's what Aniruddha says, so I will take it. And 2 pairs versus Queen 10. क्यों खेल रहा है? He'll fold. I think easy fold है Grindelwald के लिए. Yeah, and a big bet by Innocent Boy there.
He's like ace के साथ let's test it out. So guys, अभी 3 people left. I'll let you know कि क्या prizes है. Third position पे someone is taking home 31,500. Second position पे 48,750. तो ये position is 16-17 हजार रुपया worth. Third और second का. And up top is 72,000. So And what was the entry fee part for this tournament? 1,299. So if you ask, okay, Kings versus Queen 4, I think ये Green Viper. Yeah, amazing. Like, don't you think it's an amazing ROI? Like from a 1,200 rupee buy-in, like the winner gets to take home 75,000 almost. 60 times. It's crazy. मतलब Amazing. कितने bullets fire कर सकते हैं if you have the confidence to ship it. Yeah. So anyway, coming back, लोगों ने username डाला है कि नहीं डाला है वो मैं check करता हूँ while you commentate, Anirudh. Oh, King 3, Queen 10, Ace. So everyone has like somewhat of a hand here in three-way. Queen 10 should be opening. And like इसपे actually Innocent Boy can just shove if he is, you know, like, yeah, he decides to min click here. That is also like a decent play, but yeah, Ginderwald can just call now. Ginderwald can probably just give this up now because terrible turn for Innocent Boy. Terrible turn for Innocent Boy there. Not straight for Ginderwald. And there's a shot call, makes sense. And yeah, that's it. Ginderwald gets a double up. So, you know, that is why, like, this is what I was saying. Like, you know, you give your opponent a free check or you give your opponent, like, free equity and they're gonna, like, spike the 3-4 outer and then तुम रोते बैठोगे यार कि काश मैंने तभी शव कर दिया होता आज मैंने शिप किया रहता था ये टूर्नामेंट. सही बात है यार. मतलब इस पे इनोसेंट बॉय का फ्रेम ऑफ माइंड क्या होगा ना यार. इट्स लाइक इट हर्ट्स यार बिकॉज़ यू आर ऑन द एफटी. ओके नाउ ही इज गॉट अ फ्लश ड्रॉ बट ठीक है सामने वाला के पास कुछ नहीं है. इनोसेंट बॉय तो यार वहां पे सोच रहा होगा कि यार मेरी तो पार्टी है हेड्स अप जा रहा हूँ चिप लीड के साथ क्या घुसा दिया है उसने उसे ही मन. बट अनिरुद्ध मेरे को यही समझना है यार कि जो अग्रेसिवनेस एक एक्स्ट्रा लेवल की मुझे दिख रही है जो कभी कभी वो जगह पे शव है नहीं है. लाइक यू नो बिकॉज़ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ योर टूर्नामेंट्स chips on stake, yeah, which is I know FT पे बहुत चलता है ये, but that's when you have 10, 12 bigs, 15 bigs. Here I'm seeing with 25 bigs people are shoving. Is that really what everyone should be doing who's watching? I mean, so you can, so if you are putting in decent volume, like I don't think like you know कि like you're so of course like for recreational players or for players like अभी I haven't been putting in that much volume recently. So for me, all FTs are like really important and I'll play slightly different. But if I'm putting in volume, then like that FT doesn't matter to me. Like I just have to pick that spot and take that spot. Like I have to just make sure what I'm doing there is right. But if I'm someone who you know plays recreationally or doesn't have enough bankroll to put in that much volume, you want to match then yeah. Okay, so this can actually be like a hand. Yeah. Limb. Innocent Boy again with the limb and Green Viper can again just shove here as we have seen him do on Ginderwald. I think shove karega. Yes, decides to shove. Call off, of course. Innocent Boy calls. No 9 and Innocent Boy gets a double up. GG. Innocent Boy gets a double up there. Wow. So guys, I hope सब लोग ने यूजर नेम डाले. मैंने अभी तक किसी का फनी यूजर नेम देखा नहीं है भाई लोग. फिर मेरे को गाली मत देना कि टिकट नहीं है ऐसा सब. मेरे को कॉन्टेस्ट चेंज करना पड़ेगा. और ओके जस्ट 3 लोग बाकी थे बट टेक्निकल एरर तो आनी थी बट एवरीथिंग इज बैक नॉर्मल आई थिंक. चलो ठीक है. Yeah, I think it will be sorted in a couple of minutes. Yes, we have 20 people watching. Anirudh, just think of another funny ticket giveaway. जिसके पास यूजर नेम नहीं है तब तक जाओ MPL पे बनाओ जल्दी से यूजर. हाँ यार MPL पे पहले अकाउंट बना यार. Like you get such massive ROIs. धमाल है. But यार I mean in general like चलो एक काम करते हैं. Let's tell everyone to make memes on this table. Like you know our poker जनता is usually very meme friendly and like काफी मीम्स तो चलते रहते हैं. तो यार लेजी चीता या जो वो दूसरा प्लेयर था उन पे बनाओ मीम वीम टैग करो MPL पोकर को योर पोकर गाय को एंड आई थिंक लाइक द पर्सन विद द फनीएस्ट कैप्शन और द फनीएस्ट मीम टेक्स होम अ टिकट. आई एम गेम. मतलब अगर पब्लिक को थोड़ा मेहनत कराएंगे बोल रहा यूजर नेम फनी नहीं है तो क्या करे बाबू राव रख दे. आई गेट इट मतलब आई गेट इट कि फनी नहीं हो सकता. मैंने तो ट्राई मारा था कॉन्टेस्ट के लिए. अभी ये कॉन्टेस्ट अगर नहीं जम रहा है तो कुछ और कहते हैं. यस मत लो यार भाई लोग. बट यार पार्थ सो हाउ वाज योर संडे यार. तुमने क्या किया संडे पे. वर यू प्लेइंग वर यू. आई वाज गोना टॉक टू यू अबाउट दैट ओनली. ओके चल गाइस एक सेकंड. निशा सिंह
के ऊपर कैप्शन करने लगो। आज निशा सिंह हैड प्लेड, वी वर सपोर्टिंग हर, बट बहुत रफ अग्रेसिव समझ के बाहर वाला प्ले था। तो निशा सिंह करके कुछ भी कमेंट करो, द बेस्ट कमेंट टेक्स होम अ टिकट, लेट्स टेक इट दैट वे। तो अपन इमीडिएट कर पाएंगे निशा सिंह को लेके। वो कैप्शन में निशा सिंह होना चाहिए, कमेंट में, और बाकी का कुछ भी बोलो। आप लोग ने प्ले देखा है उसका, तो ये करते हैं। तब तक हम लोग बात करते हैं संडे ग्राइंड के बारे में। बोलो अनिरुद्ध, संडे ग्राइंड मेरा तो यार सैटरडे नाइट का ग्राइंड था। मैं फाइनली सैटरडे नाइट का कुछ प्लान नहीं बना, डिसाइड किया आज लैपटॉप, मेरा इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी था, पुट अप, गॉट 6 टेबल्स गोइंग, कैश टेबल्स, 50-100, धमाल मजा चालू किया, एक्साइटेड। फर्स्ट 1 hour आई एम अप सम गुड, आई कैन से गुड सम 3.5 buy-ins in the first 1 hour. So pretty excited कि भाई 50-100 पे 3.5 buy-ins हो गया एक घंटा आज रात। Saturday night has been working good. And just when how poker and cash games can treat you, right? So after being 3.5 buy-ins up, you fall and eventually one buy-in down. So I was like, okay. तो उस दिन एंड किया सैटरडे। तो संडे आई थिंक आई जस्ट मैनेज टू कवर दैट अप। कुछ टूर्नामेंट नहीं खेला। आई सॉ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, काफी वो सही आपके सब मेन इवेंट्स चालू थे कल इतने सारे, तो वो सब देखा मैंने। So यार मेरा एक्चुअली कुछ नहीं था। हाँ, so I had actually gone to Pune. It was my grandparents' 50th anniversary. And एक दो टूर्नामेंट्स के डे 2 हुए थे। So सिर्फ वो खेले रात को 10 बजे। Again, no like super deep runs, semi deep runs, like, you know, whereas like 50th, 60th, ऐसे like out of 500, 600 players. So again, decent. थोड़ा यार. But it always feels nice to, you know, have day 2s and like make money without investing anything. Guaranteed money is always nice. Yeah. Then you're just hoping कि can I max this out today? वो तो सही है. Can I max it out? So that happened. हाँ. But yeah, I mean, in general, comment आने लग गए. हाँ. अरे बहुत बढ़िया. हाँ. So I think I'll just get a feed from the team कि क्या हो रहा है. Guys, do we have an update? Okay, standings. Okay, guys, do we have an update? Okay, we're awaiting an update. तब तक मैं comments पढ़ लेता हूँ. लोगों के आने तो लग गए. पढ़ो यार. Okay. But it's always like amusing how funny, you know, people get and like how their comments are. Boss, they are next level. मतलब मैं जो एक तो वो memes भी जो चलते हैं, तो okay, I think थोड़ा लफड़ा हो गया है. So guys, what you see here on the screen is like who won. So Green Viper actually ended up taking it down. So like मेरे intuition के हिसाब से it worked. So Path now owes me a beer the next time we meet. बेयर ठीक है भाई. हाँ, मैं अभी बोला जो ग्रीन वाइपर का वो था, बट हाँ, ये मेट ड्यूरिंग द MPL सॉरी मुंबई पोकर मीटअप में अपन मिले थे. बहुत मजा आया था. Yeah man, that was an amazing day. ओके, सो एक बार फाइनल विनर्स अनाउंस करते हैं, फिर वो टिकट्स गिव अवे करते हैं. एक तो कमेंट्स पढ़ते हैं, मजा आएगा. फर्स्ट जो जीत गया, लाइक अनुराधा सेड, वाज ग्रीन वाइपर, taking home 72k. हाँ, 72,000 रुपीज यार, क्या करने का यार. सेकेंड इनोसेंट बॉय टेक्स होम 48.75 एंड थर्ड वाज ग्रिंडेलवाल्ड. There has been a technical error. Sorry guys, वो लास्ट का FT का कुछ तो इशू आ गया है, बट इट्स ओके. इट्स अ न्यू स्टार्ट. 10-10 लाख के इवेंट्स की भी FT होंगे, मजा आएगा. दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. जो लोग आए उनके लिए मैं टिकट सेकंड का गिव अवे कर रहा हूँ. ओके, लेट्स रीड द यूजर नेम्स कमेंट्स फर्स्ट. After seeing FT poker, coaches like चमाइला उठ के बाल्टी मारेगा, पानी नहीं मांगेगा. ओके. निशा राहुल कुमार से निशा सिंह पापा की परी. रोहित कुमार से निशा सिंह जलपरी. निशा जलपरी जी को शॉपिंग करना होगा, जल्दी में होगी, सो ऑल इन करती गई, रोज देने वाला होगा कोई. तो आज रोज डे है, तो आई थिंक has that Valentine's like entire fiesta begin? अरे वही चल रहा है. तेरा तो प्लान हो गया यार, यू आर मैरिड. क्या प्लान है? हाँ बस देख, अरे अंगूठी तो मेरे पास भी है यार, पर मेरी शादी नहीं हुई है. हाँ, बट मेरी चाइल्ड मैरिज हो गई है, तो अच्छा. अभी अपन ये शादी के पहले सब ओके, रोज डे और सब है ना शादी के पहले होता है. उसके बाद अभी सिर्फ एक्सपेंस घर पे बैठ के सो.
expense day of 1, course, of expense day course. 2, expense day 3, expense day 4. तो अरे वही यार होता अभी है, तो तू इसका इतना कल कल 3 3:30 बाय यू आर अप फ्रॉम लाइक डे बिफोर फ्रॉम पेइंग कैश, तो वो लाइक उसका कुछ तो पार्टी वार्टी तो देना बनता है ना वाइफ को. अभी वही दर्द है कि उसके बाद मैंने निकाला क्यों नहीं, -4 बाइन बाद में जाने की हाँ. जरूरत नहीं थी, तो वो कैश गेम्स. Okay, so I'll repeat the final standings. Green Viper was number one. So go. Okay, there's a minute error. I am sorry once again. Innocent Boy is actually number one for 72,000. Okay, okay. Second was Grindelwald and third was Green Viper. तो थोड़ा प्लान में चेंज हो ना. संडे शो स्टॉपर में मस्त ना धोके प्लान थोड़ा चेंज हुआ है. Yes. Innocent Boy 72,000 number one. Grindelwald 48,750. Green Viper 31.5. Thanos, I will erase half of the earth. Nisha, let me burn my. ये मेरे को थोड़ा पता नहीं है SRQC के क्या होता है फर्स्ट. मैं मार्वल सीरीज नहीं देखता है. हाँ नहीं नहीं मैंने देखा है बट लाइक दैट इज स्टिल. हाँ. अंजन घोष, प्रो आफ्टर सीइंग दिस FT. कौन है ये लोग, कहाँ से आए होंगे लोग. I just blinked and the FT was over. I had my bet on Green Viper when he didn't have a good stack. So can I get a ticket? Nisha Singh. देवराज सिंह बोलता है निशा सिंह तो RCB की टीम निकली. That was funny. That was funny. राहुल बोले अब सिर्फ एनिवर्सरी होता है. आई वन मैंने बोला था, इनोसेंट बॉय बोला था जीत गया. ये वाइपर तो नकली निकला. ओके गाइस, सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स. अनिरुद्ध, आपको नहीं पता कि कौन क्या है, तो मैं एक तो पहले शॉर्टलिस्ट करके बोलता हूँ क्या है. एक तो फनी कमेंट्स में और एक जिसने कमेंट किया था. तो एक टिकट दो टिकट दे देंगे. चलो एक देते हैं अपन अपनी ये वाली सैटरडे स्वैग वाली जो फनी कमेंट है, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट वाले बताता हूँ. निशा सिंह पापा की परी, निशा सिंह जल परी, शॉपिंग करना होगा रोज डे के लिए इसलिए भाग गई. फिर है थानोस वाला जो मेरे को समझ में नहीं आया, निशा सिंह ओनली फॉर कैश सिंह. फिर है निशा सिंह तो RCB की टीम निकली. एंड ये मेरे पास कमेंट्स है शॉर्टलिस्ट में. आप बताओ किसको देना है, आपको नहीं पता. यार so I am conflicted between the two. Like Jalpari is kind of like poker slang for fish. You can call her a fish. And the other one would be the last one that you said, RCB की टीम. चल ठीक है, तो अभी मैं इंटरफेयर करता हूँ. देवव्रत को कल टिकट दिया तो देवव्रत कल ही जीता था कॉन्टेस्ट में, तो सॉरी देवव्रत, मारना मत. लेट्स गिव इट टू द फर्स्ट वन. जलपरी. जलपरी किसने लिखा है? राहुल नहीं, रोहित कुमार ने. सो रोहित कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपका इंस्टाग्राम पे DM कर दो मुझे MPL ID. और लास्ट है जिसने प्रिडिक्ट किया था कि कौन जीतेगा टूर्नामेंट, एंड वो तो एकदम रेडी है. वो तो आई थिंक सबसे पहले जिसने कमेंट किया था, मैं जल्दी देख लेता हूँ. वी आर गोइंग टू एंड द स्ट्रीम नाउ. Okay, I don't have the right answer there, so I can't predict who has commented. We have 21 people watching now. Username Supernova. Okay guys, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा, बाद में देखते हैं. अगर जो होएगा उसको टिकट दे देंगे. That is it, guys. That's the first FT. Thank you so much for joining. Let me know, comment also. मेरे Instagram पे भी डालो how it was. This was Sunday Showstopper with MPL. We'll be doing it again in the coming week. Thank you guys for tuning in. Perfect. Thank you guys. Thank you so much for watching. 8 बजे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो MPL का 2.5K का 1.1K 2.5 lakh 1.1 thousand buy-in पे. So hopefully we'll see you there. Monday Madness. Bye guys. See you guys. Bye bye. Take care.